Hello everyone, I am Kapil Garg from Department of Applied Sciences. Today we are going to discuss about wave motion, transverse and longitudinal. As we have studied in our previous lecture that mechanical waves are basically of two types. That one is first one is transverse and second one is longitudinal. Clear? So in this lecture we will discuss about the transverse and longitudinal wave. Wave motion, transverse and longitudinal. Wave motion refers to the transfer of energy through a medium or space without the permanent displacement of particle. Permanent displacement of particle ना हो कि वो किसका ट्रांसफर होता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है. Waves can be classified based on the direction in which particles of medium vibrate relative to the direction of wave propagation. The two primary types of जो wave motion होते हैं, first one is transverse wave motion, second one is longitudinal wave motion. So let us discuss about the transverse wave motion. Transverse wave motion, the particles of medium move perpendicular to the direction of wave propagation. जो पार्टिकल्स होएगा किसी मीडियम का, वो कैसे मूव करेगा? परपेंडिकुलर मूव करेगा किसके? डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपागेशन के. एज द वेव पार्टिकल्स, एज द वेव ट्रेवल्स, ईच पार्टिकल मूव अप एंड डाउन. जैसे ही वेव ट्रेवल करेंगी हर एक पार्टिकल क्या करेगा? मूव अप करेगा एंड डाउन करेगा, क्रिएटिंग ए सीरीज ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ. एक सीरीज बनाएगा किसकी? क्रस्ट की और ट्रफ की. करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स. करेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें ट्रांसवर्स वेव की, डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल मोशन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर. एग्जाम्पल हम इसका दे सकते हैं, वेव ऑन स्ट्रिंग, लाइट वेव्स, वेव वाटर वेव जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. सेकंड वन इज एम्पलीट्यूड, द हाइट ऑफ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन. वेवलेंथ क्या होती है? द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ. नेक्स्ट वन इज फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ क्रस्ट और ट्रफ पासिंग ए फिक्स्ड पॉइंट पर सेकेंड. दैट वन इज आवर फ्रीक्वेंसी. Some examples of transverse wave are given here. First one is waves on a string. When you shake one end of the rope and string, you create transverse wave. The rope moves up and down while the wave travel horizontally. Example हम इसका दे सकते हैं, waves created by plucking a guitar string or shaking a rope. Second one is light waves. Light is an electromagnetic transverse wave where oscillations occur in the electric and magnetic fields that are perpendicular to each other and to the direction of wave propagation. For example, sunlight, visible light and radio waves. Third one is water waves. When you create a ripple in the water, it moves outward in the circular pattern. The wave particle move in the circular orbit, but the energy of water moves outward. Example, ripples created when a stone is dropped into water. Second one is longitudinal wave motion. In longitudinal wave motion, the particles of medium move parallel to the direction of wave propagation. These waves have the region of compression and rarefaction. Characteristics की अगर हम बात करें longitudinal waves की, तो first one, direction of the particle motion parallel to the direction of energy transfer. Compression की बात करें, the region where particles are crowded together. रेयरफेक्शन की बात करें, द रीजन्स वेयर द पार्टिकल्स स्पेस्ड फर्दर अपार्ट. एग्जाम्पल्स की अगर हम देखें यहाँ पे, साउंड वेव्स, सेस्मिक पी वेव्स एंड वेव्स ऑन ए स्प्रिंग. एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें किसके? लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की. सम एग्जाम्पल्स आर गिवन. फर्स्ट वन इज साउंड वेव्स, सेकेंड वन इज सेस्मिक वेव्स एंड थर्ड वन इज वेव ऑन स्ट्रिंग. तो साउंड वेव्स की अगर मैं देखूँ, इन एयर साउंड ट्रेवल्स एज ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव. एयर के अंदर जो साउंड ट्रेवल करेगी वो कैसे करेगी? लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की फॉर्म में करेगी. एज ए साउंड सोर्स वाइब्रेट्स, इट कंप्रेसेस एंड रेयरफाइज द एयर पार्टिकल्स, क्रिएटिंग एरियाज ऑफ हाई एंड लो प्रेशर. ठीक है. एग्जाम्पल, ए वाइब्रेटिंग
tuning fork on a speaker emitting sound. Seismic waves या P waves की बात करूँ मैं, these are the fastest type of seismic waves generated by earthquakes. They travel through the earth interior and cause particles to vibrate in the same direction as the waves motion. Example, P waves during the earthquake. P wave को हम प्राइमरी वेव बोलते हैं. वेव ऑन ए स्प्रिंग, जिसमें से हमारा कंप्रेशन और रेरफेक्शन को हम एक्सप्लेन करते हैं. वेर यू पुश और पुल ए स्लिंकी ऑन स्प्रिंग in and out, you create longitudinal waves. The coils of a spring compress and spread apart in the direction of waves. Example, oscillating a slinky or spring back and forth in the direction of length. This is all about the longitudinal and transverse wave. I hope all of you understand about the longitudinal and transverse wave. Thank you to all of you for watching this video.